So let's start today's class. This is your EVS class. So today we are going to revise next chapter, that is chapter number 19. Let me first share the screen. You have to read the paragraph. Those who will read the paragraph, they have to explain what it is in paragraph, what that paragraph is actually explaining. So chapter number 19 is, हाँ wait one by one. रीडिंग करना है तो सबके हाथ पहले उठ जाते हैं. So chapter number 19 is water sources. What are the sources of water? Rivers and seas. Yes, Trevor, you want to read? So first paragraph. The local water bodies okay, wait one by one. I will give chance to everyone to read. Last class में कौन पढ़ा था? They will not get the chance. Let's other also read. Shaurya? Yes, ma'am. हाँ, पढ़ो. The local water bodies, there may be a number of water bodies present in our neighborhood. We have a large strand, a pond, a canal, or a river. At certain हाँ. places, even dams are present. On the look for water bodies in our neighborhoods. On the river. Shaurya एक लाइन भूल गए. Present on the river, फिर water is of our. फिर से पढ़ो. At certain places. Present on the river, water is one of our basic requirements. Therefore, it is quite natural that people look for water bodies in their neighborhoods. हाँ. Now explain. Explain the paragraph. मैम, यहाँ पे बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं नेबरहुड में, आसपास में. हमारे बहुत सारे हैं नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं. हमारे पास लार्ज टैंक, पॉन्ड, कैनल और रिवर भी हैं. ओके श्योर, ठीक है. मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो व्हाट दिस पैराग्राफ इज एक्सप्लेनिंग, पैराग्राफ बोल रहा है देयर माइट बी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज प्रेजेंट इन योर नेबरहुड. बहुत सारे वाटर बॉडीज प्रेजेंट हो सकते हैं आपके नेबरहुड में. what it may be a tank, it may be a pond, it may be a canal or it may be a river. कुछ भी हो सकता है. रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, टैंक हो सकता है. ओके. एंड इन सर्टेन प्लेसेस अगर रिवर है तो रिवर के पास क्या बना है? डैम बना है. ओके. एट सर्टेन प्लेसेस इवन डैम्स आर प्रेजेंट ऑन द रिवर. सो वाटर इज बेसिक रिक्वायरमेंट for every living thing. What are the basic requirements? They need water, they need air and they need food. But two basic, very basic is water and air. What पानी और हवा के बिना नहीं रह सकते. So one of the basic requirement for every living thing is water. Okay. So water is the basic requirement. So what is the natural source of water? Natural source, the main natural drinking source of water is river. Okay. Why so many hand raised? Yes, Priyansh. For next paragraph. Okay. Next paragraph is rivers, our main source of drinking water.
हाँ प्रियांश, पढ़ो एंड एक्सप्लेन. Yes, Priyansh, read and explain. Priyansh. Okay, now I will give chance to anyone else. Yes, Gatha, पढ़ो. Ma'am, the low water boils. That I have highlighted, वो पढ़ना है आपको, वो वाला पैराग्राफ. Rivers, many rivers Originate originate for snow-covered mountain. mountains during summer. Snow melts and the river gets Continuous. continuous supply of water. That rains also add water to the river during the rainy season. That for the river become full of water during the season. हाँ, explain करो. Try at least try to explain. Gatha, try to explain. Okay, I'm explaining. What this paragraph is telling कि many rivers they are the who is the origin, कहाँ से वो start होते हैं. So river it's originate from snow. It originate from mountain that are covered with snow. Okay. So many rivers originate from mountains that are covered with snow. Originate मतलब उनकी शुरुआत, उनके starting point, वो कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ से start होते हैं rivers. They originate from mountains that are covered with snow. Okay. And what will happen in summer season? This snow will melt because summer season में sun बहुत ज़्यादा bright होता है. Many intensity of sun is very high. So what will happen? The snow will melt. So snow starts melting and the river get a continuous supply of water. Snow melt होता है and snow will after melting snow converts to water. So this water adds to the river. ओके. सो रिवर का लेवल बढ़ गया, वहाँ पे सप्लाई वाटर का लेवल बढ़ गया. एंड रेन ऑल्सो एड, स्नो इज एडिंग वाटर टू द रिवर एंड रेन ऑल्सो एड वाटर टू द river only in rainy season. In summer season, who is adding snow? Snow from mountain. It is adding water in the river, and in rainy season, rain is adding water in the water bodies. Therefore, the river become full of water during rainy season as well as in summer season. Okay. In rainy season, the river become full of water. Now, on this basis, there are two types of river. One is snow-fed river and the second is rain-fed river. What is snow-fed river? Who will read? Yes, Samiksha पढ़ो. What is snow-fed river? बस इतना ही पढ़ना है समीक्षा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इधर है ना बुक, पढ़ यहाँ से देख. Rivers that get water through the melting of snow are called snow-fed rivers. In our country, rivers Bees, Satluj, Brahmaputra, Ganga and Yamuna are snow-fed rivers. They have plenty of water throughout the year. Okay. So first type of river is snow-fed rivers. Snow-fed rivers means उनमें पानी, इस rivers में पानी कहाँ से आता है? Snow melt होती है. Snow melting of snow add the water to the river. So example of snow-fed rivers are Bees, Satluj, Brahmaputra.
गंगा एंड यमुना, ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए. स्नो फेड एग्जाम्पल ऑफ स्नो फेड रिवर आर सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड यमुना. ओके, एंड दिस रिवर हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल इस इन नदियों में पानी रहता है, इनका पानी विल नेवर गेट ड्राई. ओके, यस भव्या. Ma'am, I want to read next. Read next one. Rivers that get water from rains are called rain-fed rivers. Mahanadi, Narmada, Godavari, Krishna, and Kaveri are rain-fed rivers. They have less water in them during summer. Okay, can you explain? Rivers जिन्हें रेन से पानी मिलता है वो रेन फेड रिवर्स होती हैं, जैसे कि महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रेन फेड रिवर्स हैं. Okay. इनके ये नदियों में पानी कम रहता है समर में. During summer season. Okay. Because they are the rain fed river and in summer season बारिश नहीं होगी तो obviously उनका level क्या है? Level of water, this river will have less water in them in summer season because they are the rain fed river. So example of rain fed river are Mahanadi, Narmada, Godavari, Krishna and Kaveri. सबके examples याद रखोगे because इसके ऊपर questions बन सकते हैं. What are the examples of rain-fed river? What are the examples of snow-fed river? Okay. Now moving to next paragraph. Yes, Navya. Ma'am, I have read. Read this one. Yes, ma'am. First one, all rivers fall into the sea at the end. Second one, the water bodies in a map are shown In blue color. Third point, more than half of India's border is ma'am क्या है? Surrounded by sea. Arabian Sea and Bay of Bengal. Arabian Sea and Bay of Bengal. Fifth point, we have a visit of India official on the southern side of our country. Okay, very good, Navya. So in the map you can see here some आपके पास book है तो आप अपने book में भी देख सकते हो. Blue lines. This blue lines tells these are the rivers of our country. Okay, all the blue color lines tells the name of the rivers. Okay, and all rivers, जितनी भी नदियां हैं, all rivers ultimately fall in ocean. वो कहाँ जाके मिलती है, उनका end कहाँ पे होता है? They start from mountain. वो start होती है mountain से, but they end the end of the sea. They end in sea. Okay, they ultimately end in sea. All the rivers they ultimately fall. They end in sea. Our India is surrounded by on the three sides it is surrounded by a water body, that is Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean. Arabian Sea in the left, Arabian Sea in the west, Bay of Bengal in the east, and in south it is Indian Ocean. All the three sides of our country, all the borders, three side borders covered by sea. It is surrounded by sea. Okay. Yes, Apurva. Yes, ma'am.
हाँ पढ़ो. Ma'am, I want to read. हाँ, read next one. Rainfall and Rainfall and water in the river. Water level in the rivers is not the same all round the year. It is in summer than in winter. It is highest the rainy season. Sometimes due to heavy rainfall, the river overflow and the adjoining land areas get submerged in water. We call this condition flood. फ्लूड नहीं बेटा, फ्लड. क्या है वो? फ्लड. फ्लड. ओके. सो rain fed rivers are fed by rain. So what will happen if there is excess amount high rain? कभी आपने न्यूज में सुना होगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुई, उस वजह से बाढ़ आ गई. So what does this mean? This means अगर कोई भी एरिया में बहुत ज्यादा इन ड्यूरिंग रेनी सीजन देयर इज हाईएस्ट रेनफॉल, अगर वहां पे बहुत बारिश हो रही है, तो व्हाट विल हैपन? द वाटर बॉडी, सब वाटर बॉडी की एक कैपेसिटी होती है. Rivers will fill with the level of the water in river will increase. Okay, summers के टाइम में रिवर का लेवल क्या होता है? वाटर लेवल is very less. It is less in summer than in winters. Level of water in rivers is less in summer than in winters, and it is highest during rainy season. Rainy season में बहुत ज़्यादा high होता है because rain is adding its water in the river. So अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ का पानी क्या होगा? Overflow होगा, and the river will overflow and the water will flow down into the adjoining areas. उस water bodies के आसपास जितने भी घर हैं, जितना भी land है, that will submerge, वो डूब जाएंगे पानी में. So this condition, when the adjoining areas near the water bodies get submerged in water, this condition is called flood. Okay. Now what is called drought? Drought क्या होता है? Who will read what is called drought? Dakshita, Molly, Nishchay, Shaurya, start your video. हाँ निश्चय पढ़ो next paragraph. If the rainfall is less, the river have less water. Some of the rain-filled rivers dry up during the summer season. If rainfall is less, people do not get water of their crops. The crops are damaged and there is less look of food. The suntain is called drought. This situation is called drought. Yes, ma'am. Okay. Now rain-fed rivers, they are fed by rain. बारिश से rivers में पानी होता है, पानी का level बढ़ता है. But what will happen in summer season? बारिश नहीं है तो what will happen? कोई बताएगा? Anyone wants to explain this paragraph? Raise your hand. Yes, Kavya. Ma'am, life in the rivers and seas. नहीं, I asked explain this paragraph that I have highlighted. Ma'am, in the rain. Bhavya explain. हाँ Bhavya explain. If the rain, मैम अगर जब बारिश कम होती है, रिवर्स में कम पानी होता है, तो रेन फेड रिवर्स पूरी की पूरी सूख जाती है. कब सूख जाती है? मैम समर में.
समर सीजन में, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो उनमें पानी नहीं आएगा, इसलिए वो सूख गई। ओके, And people do not, तो मैम पीपल्स को पानी नहीं मिलता है, इनफ वाटर फॉर their crop. water, so they will not get water for irrigation अपने crops, for agriculture purpose they will not get water enough, है ना, वाटर का शॉर्टेज हो जाएगा। सो उस वजह से क्रॉप्स विल स्टार्ट डैमेजिंग। फिर क्रॉप्स अगर डैमेज होंगी तो देयर विल बी नॉट इनफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, इनफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स। ओके, सो उस वजह से क्या होगा, शॉर्टेज Yes, ऑफ ma'am. फूड। ड्यू टू दैट देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन दैट एरिया। So this situation, when there is less amount of water in the rain, this situation, when there is no production of food, less production of food, crops started damaging. Okay, when there is shortage of food, this situation is called drought. This situation is called drought. जब पानी की कमी होती है, when there is shortage of water, this condition is called drought. Okay, when there is excess of water, this condition is called overflow of water, this condition is called flood. जब पानी ज्यादा है तो उस कंडीशन को फ्लड बोलेंगे, जब पानी कम है उस कंडीशन को ड्रॉट बोलेंगे। ओके, नाउ लाइफ इन द रिवर्स एंड सी। So like I told, every living things need water for survival. So pani mein bhi obviously there will be a life in rivers, waters, river, sea, ocean. वहाँ पे भी organisms रहते हैं, fish, many different animals, plants. You can see there. Who will read this paragraph? Arush. Yes, ma'am. All water bodies have a number of plants and animals in them. We find a number of plants like water hygiene and water lily in the lakes and rivers. There are seabirds in the seas. Animals found in the rivers are gharial, crocodile, turtles, tortoise, and different types of fishes and dolphins. Okay. सो इन ऑल वाटर बॉडीज, अगर आपके घर के आसपास भी कोई वाटर बॉडी है, लाइक अगर कोई रिवर है या कोई पॉन्ड है, तो यू कैन, आप उसके पास कभी जाना दूर से, नॉट एकदम वेरी क्लोज, दूर से देखो आप, उसमें कुछ इंसेक्ट्स, कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स भी रहते हैं। सो ऑल वाटर बॉडीज हैव नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देम. We find a number of plants like water hyacinth and water lily. These are the plants that you can see in water only, in water bodies only. ये सिर्फ पानी में ही रहते हैं. That's why they are called aquatic plants. Aquatic plants बोलते हैं इन्हें. Water hyacinth and water lily. You can find them in lakes and river. Seaweeds in the ocean. Seaweeds मतलब weeds means unwanted plants that are called weeds. Unwanted plants are called weeds. So seaweeds, समुद्र में पाए जाने वाले unwanted plants. You can see unwanted plants in sea. There are seaweeds in the sea. Animals found in the rivers. Rivers में बहुत सारे animals you can find like घड़ियाल, crocodile, turtle, dolphin, different type of fishes. Okay. So these are the animals, plants that you can see in different water bodies. Here are the pictures given. आप में से किसी ने देखा है इस प्लांट्स को या एनिमल को? Pelican, this is a bird you can find near river, near oceans. Okay. Next paragraph, who will read? Let me read this next paragraph. Many water birds like pelican, storks, and ducks are found near these water bodies.
So birds like pelicans, stork and ducks. These are the examples of birds that you can find near water bodies. The sea water are full of marine fishes, crocodile, shark and whales. So in sea you can find different type of fishes, crocodiles, shark and whales. There are large coral reefs, crab, molluscs also. Okay. In sea you can find a diverse variety of plants and animals. बहुत अलग अलग टाइप के animals आपको sea में देखने को मिलेंगे. Okay. Now water pollution. What is water pollution? Who will read this paragraph? The whole paragraph. निश्चय आप पढ़ लिया. पूर्व you also read. I want. Who will read this paragraph? Molly? Okay. Yes, ma'am. Read this paragraph. Okay, ma'am. Making water rightly by adding unwanted and harmful substance in known as water pollution. Wanted water is harmful for all animals and plants. हाँ. In Rural. rural हाँ पढ़ो. Areas. मैम मैं तो आप सेकेंड लाइन में हूँ. हाँ पढ़ो ना. पढ़ो, पूरा पैराग्राफ पढ़ना है. Water bodies, the places of base activities. Women gather there Wait, Molly. So what is water pollution? When we are adding unwanted and harmful substance in water and making it dirty, this is known as water pollution. Unwanted materials like plastics, plastic bags, toys, papers, wrappers, all these things. These are the unwanted and harmful substances. Chemicals from factories, these are the unwanted materials and harmful substances. So if we are adding this in water, what will happen? Ultimately, water will get pollute, गंदा हो जाएगा. So पानी में रहने वाले जितने भी plants and animals है, what will happen? They will ultimately die. उनको कोई ना कोई disease हो जाएंगी. They will not be able to survive in water. Okay, so that water will get polluted and it will be harmful for all the living organisms that are present in water. Now in rural areas means gaon ke area, village area. Okay, in water bodies, local water bodies are the places of busy activity. Local water bodies means like ponds, lake. Okay, वहाँ पे क्या? Here you can see in the picture this woman. What this woman is doing? This woman is washing clothes in the river, near the water body. This child is bathing in the river. He is swimming in the river. He is swimming in the pond. Whatever type of water body is present. So in rural areas, in second picture you can see the domestic animals. They are bathing in the water body. So women gather there to fetch water. Sometimes they wash their clothes on the bank of the water body. The children take bath in it and even the cattle are brought there to take a bath. In the picture you can see this woman is washing the cloth. This child, how he is, kitna khush hai wo. That child is happy. Do you think that this activity make the water dirty? आपको लगता है क्या ये सारी एक्टिविटीज से वाटर गंदा हो रहा है? Say yes or no by nodding your head. अगर हाँ तो मुंडी हिलाओ. क्या इन एक्टिविटीज से पानी गंदा हो रहा है?
नॉड योर हेड, स्टार्ट योर वीडियो एंड नॉड योर हेड। अगर हाँ तो मुंडी यस हिलानी है, और अगर नहीं तो मुंडी नहीं हिलानी है। क्या इन सब एक्टिविटीज से पानी गंदा हो रहा है? यस। ओके, वेरी गुड। सो प्रियांश, रौनक, दक्षिता, आरुष, गाथा, अपूर्व, इन्होंने मुंडी हिलाई है, मीन्स यस, दे सेड कि हाँ पानी गंदा हो रहा है। और बाकी जिन्होंने नहीं हिलाई मीन्स उनका कहना है कि पानी गंदा नहीं हो रहा है ना? यस काव्या? Ma'am, I also want to read. You also want to read? Okay, read the next paragraph. You have Yes, not ma'am. all these activities making the water dirty, yes or no? Yes, ma'am. ये सारी activities पानी गंदा होता है? मैम आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? क्यों समझ में नहीं आ रहा? मैम एक बार आप फिर से बोलो। So these activities are making the water dirty. So can we use this water for drinking? क्या हम उसे पीने के लिए यूज कर सकते हैं? Yes or no? नहीं, नहीं कर सकते ना। हाँ, कोई पिएगा क्या ऐसे पानी को, जिसमें कोई नहा रहा है, जिसमें केटल बात कर रही है, कोई पिएगा? No one wants to drink this type of water. So now, how do rivers and sea get polluted? काव्या, पढ़ो। When wastes from factories are poured directly into the water sources like lakes, rivers, or seas. When people wash clothes, but बात, clothes bath, then their kettle. on the banks of a river. Okay, wait. So कैसे पानी गंदा हो रहा है? कैसे रिवर का पानी, समुद्र का पानी, सी का पानी गंदा हो रहा है? फर्स्ट रीजन इज व्हेन द फैक्ट्रीज, इन द पिक्चर यू कैन सी फैक्ट्रीज से गंदा पानी रिवर में ऐड हो रहा है। तो फैक्ट्रीज आर पोरिंग डर्टी वाटर। उन्होंने जो पानी यूज किया वो गंदा पानी वो कहाँ पे डाल रहे हैं? दे आर पोरिंग दिस डर्टी वाटर इन द लेक्स, रिवर्स और सी। इफ यू विल सी, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, जनरली फैक्ट्रीज आर मेड बिसाइड एनी वाटर बॉडीज। हमेशा फैक्ट्री किसी ना किसी एक वाटर बॉडी के पास में ही रहती है ना? अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहे होगे तो आप देखना फैक्ट्री हमेशा एक वाटर बॉडी के पास रहती है। सो दे यूज दैट वाटर एंड पानी तो यूज कर लेते हैं, बट वो गंदा पानी भी उसी वाटर, उसी रिवर में, उसी लेक में वापस डाल भी देते हैं। सो दिस इज मेकिंग द रिवर, द लेक डर्टी। सेकेंड थिंग, पीपल्स आर वॉशिंग देयर क्लोथ्स एंड दे आर बाथिंग देयर। सो इस वजह से भी पानी गंदा होता है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज व्हेन पीपल थ्रो गार्बेज, in the picture you can see the people are throwing garbage, flower, dead animals etc into the river. अगर dead animals को हम पानी में फेंकेंगे तो obviously it will get damaged, वहाँ का पानी गंदा हो जाएगा, it will be not safe for drinking. Third is when too many ships and boats run on sea water. बहुत सारे boats और ships अगर पानी पे run कर रहे, पानी से जा रहे हैं, when oil is spilled from oil rings or oil tankers into the sea. शिप है तो ऑब्वियसली शिप रन करने के लिए दे नीड ऑयल। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी रन करने के लिए फॉर मोटर बाइक वी नीड पेट्रोल एंड डीजल। इन द सेम वे शिप आल्सो नीड डीजल ऑयल फॉर रनिंग। सो अगर उसमें से लीक हो रहा है, ऑयल लीक हो रहा है, तो वो किस में मिक्स हो रहा है? वाटर बॉडी में मिक्स हो रहा है, उस वजह से वो वहां के पानी में मिक्स हो रहा है। एंड इन द पिक्चर यू कैन सी द एनिमल्स, the animals in the water bodies वो क्या हो गए? मर गए। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है।
सो ऑयल के कारण वहाँ के एनिमल्स सारे मर गए. Now, what are the effects of water pollution on animals and plants living in water? In next class, only 2 minutes are left. In next class, I will take test on this chapter. 10 MCQ questions and written question also. ठीक है? So आज कितने हैं? There were 16 students at the time of the class. और अभी